So this next segment, which is called Building Communities, which is by Pakistan's leader of building human capital, Miss Shireen Naqvi. Please give a big round of applause for the Queen of Training and Development. Thank you, Zainab. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. You've been all rejuvenated with the tea and the beautiful speakers we had earlier on. I'm sure it's all sinking in at a very, like Zainab said, mystical and spiritual level. What's the use of that level if we can't put it into action? So here goes the action. I'm reminded of this beautiful sher. Daghe sujood teri peshani pe hai to kya hua? Koi aisa sajda bhi kar ke zami pe nishan reh jaye. And that's what building communities is all about. Why were these two ladies who spoke before me, Musarrat Misbah and Nigar? Because they transformed from the self into a sense of community. They built communities. And that's why they get invited to Wibcon and the world over. Let's get into the nitty-gritties of how we link communities with synchronicity. Synchronicity expands our understanding of interconnectedness, not only between humans, but with the environment. Of personal journeys to collective empowerment. Empowerment का मतलब है im का जो prefix है अंग्रेजी में उसका मतलब होता है my. आप मुझे empower नहीं कर सकते, ये मेरा मसला है, ये मेरी agency है. I can have and use the power within me. That's empowerment. So how can I use myself and my journey to connect with others? There are many definitions of synchronicity. I chose this one because we're talking about how to build communities. What is a community? A community is a group of people with a shared sense of belonging and identity, around which they fuse for a common cause. We all work in organizations, we have families, we have a cause for our family as well as where we work. You all belong to a certain community, but let's understand that at the atomic level, and then that atom needs to be moved to put it into action. Synchronicity in action to build community spirit. What do you have to give up? सबसे पहले तो आपको कुछ छोड़ना पड़ेगा कुछ पाने के लिए. No pain, no gain. So from union to communion, please remember, the word communion में पहले जो चार हरूफ हैं, com, that is common. चाहे वो compassion में हो या किसी भी लफ्ज़ अंग्रेजी में जो com से शुरू होता है, it means common. Union is being one and within yourself being together, belonging to yourself. But how do we transform this into communion? इसमें फ़र्क क्या आता है? Scale का. मुझे अपने घर की environment में से निकल के अपने neighborhood को देखना है. जैसे मुसरत मिसबा ने जले हुए acid burn लोगों को अपनी community में शामिल किया. So she reached out. Instead of looking at her own sensitivities and pain, she reached out and extended them, expand the understanding. हमारे यहाँ क्या होता है? घर को तो हम साफ रखते हैं, लेकिन घर से निकल के क्या करते हैं? मैं सुबह से जब से आके यहाँ फिर रही हूँ, मैंने इतने ये मिंट के पेपर उठाए हैं, मैंने इतनी चीज़ें उठाई हैं जो टिशू पड़े हुए हैं नीचे. That's not a अब मेरा टिशू काम हो गया छोड़ दिया, मिंट खा लिया छोड़ दिया. But that's not the sense of community. That's the sense of me only. हम लोग अभी चाय पीने बाहर गए, कुछ मैंने देखा बड़ा मुश्किल से लोग कुर्सियों के बीच में से गुजर रहे थे क्योंकि कुर्सी अंदर नहीं की. जब मुझे अपने आप से निकल के होता है, अच्छा मैं अपनी कुर्सी अंदर कर दूं ताकि अगला आराम से गुजर जाए. जब अगले का सेंस आता है तो कम्युनिटी डेवलपमेंट शुरू होती है. What to let go and what to gain. क्या मुझे छोड़ना पड़ेगा कम्युनिटी बनाने के लिए? मैं को छोड़ना पड़ेगा. लेकिन what do I gain? The power of the collective. ज़ैनब ने अभी आपसे तालियां बजवाई. 5 उंगलियां were more powerful than the one. Shift from personal identity to collective individuality. Collective individuality. मेरी अपनी identity खास नहीं है,
लेकिन जब आइडेंटिटी कार्ड मैं पाकिस्तान का लेके एक मुल्क के आइडेंटिटी कार्ड के साथ रिलेट करती हूँ, दैट्स माई कलेक्टिव इंडिविजुअलिटी, मैं फिर भी इनफरादी ही रहती हूँ। वो कतरा जो दरिया में जाता है वो दरिया बन जाता है, वो बड़े नाम का बन जाता है, सिर्फ कतरा नहीं रहता। तो इसमें क्या ले होता है, लोगों को इनसिक्योरिटी होती है, हाय मैं तो नहीं रहूँगी, मैं तो कुछ और बन जाऊँगी। लेकिन ये सेंस ऑफ बिलोंगिंग से कवर हो जाता है कम्युनिटी में, बिकॉज आई बिलोंग टू अ लार्जर ग्रुप, अ लार्जर आइडियोलॉजी। इधर से चेंज क्या करना होता है, फ्रॉम द फियर ऑफ लेटिंग गो सेल्फ टू द करेज ऑफ मूविंग पीपल। एंड व्हाट इज इट, फ्रॉम अ विक्टिम मेंटालिटी ऑफ मैं, हाय मेरा मैं, मुझे मैं, आई, टू privilege and honor of belonging to something much larger that goes beyond my life. मैंने जब अपने इदारे खोले थे स्कूल ऑफ लीडरशिप, तो मैंने पाकिस्तान के लिए 400 साल का विज़न बनाया था कि इंशाल्लाह 400 साल बाद एक दिन आएगा जब पाकिस्तानी एक दूसरे को ट्रस्ट करेगा। इसका मैं कैसे एक्सपेरिमेंट करती हूँ, जब मैं रोड पे फिर रही होती हूँ तो मैं चलते चलते अजनबियों को कहती हूँ अस्सलाम वालेकुम, तो वो पहले तो गुजर जाता है, फिर मुड़ के देखता है इसको मुझसे क्या चाहिए। जब ये बेशक मुझे जवाब ना दे सलाम का, लेकिन ये शक की निगाह से ना देखे, और इसको 400 साल लगेंगे। लेट्स स्टार्ट टुडे इन the theoretic reasons why communities come together theoretically is people crave for identity. We all want to belong to something. For example, the apple, okay, let me give the examples later. Place-based, physical or virtual communities होती हैं, organizational, institutional, communities of action, communities of practice, and we have interest-based communities, circumstantial communities. Examples being interest-based, identity-based में Apple का cult है. How many of you've got क्या होता है, iPhones? Yeah? You feel good about having an iPhone. या Samsung वाले कहते हैं I belong to the Samsung cult. We all want an identity with the objects we carry. The place and the virtual, मैं कहती हूँ I'm a KCite, मैं लाहौर कनेट कॉलेज में पढ़ी हूँ. आपका हो सकता है कि रावियंस हों आप में से, या एचएसएन वाले हों, तो you have a sense of belonging when you come together. Virtually, Facebook पे कितने लोग हैं? So Facebook is a community that brings people together. Yeah. Organizational, हाँ जी, I belong to Habib Bank, I belong to PTCL, ये सबका आपकी identity. And that's communities of action. किसी भी action के लिए, Women's Action Forum comes together for a cause and an ideology. Communities of practice, for example, professionals, engineers, doctors, कोई आपको मिलता है, आप जी कहाँ काम, I am a banker. So banking then becomes a sense, gives a sense of community. Interest based, कोई भी नया interest हो, इसमें political interests भी हो सकते हैं, social interests हो सकते हैं, and circumstantial communities. कराची में because I belong to Karachi, वहाँ पर बिजली के बिल जब बहुत महंगे हो गए थे, तो circumstantially people formed a community और उन्होंने मिलके रोड पे बिल जलाए वगैरह. तो that was a cause that brought people together. They had a sense of belonging. They fused together. Now, let's put a community into action. सबसे पहले तो please आपकी टेबलों पे PSTD, thank you for providing all the material. ऐसे एक रोल पड़ा होगा, उस पे रबर बैंड लगा हुआ है. पहले तो आप रबर बैंड को खोलें और इस पेपर को उल्टा करके, 2 शीट्स हैं आपके पास, 2 शीट्स. इन शीट्स को आप उल्टा करके मोड़ें ताकि ये सीधे हो जाएं. उल्टा करके मोड़ें. अच्छा, ये एक ही शीट है, 2 नहीं. उल्टा करें और इस रबर बैंड को एक तरफ से, हाँ, उल्टा करके मोड़ लें सारे. अब मैं ये इस टेबल को वापस कर देती हूँ. ये आपका पेपर था 22. ऑलराइट, अब मैं आपको एलोकेट कर रही हूँ टेबल नंबर 1 and 2. देखें आपकी टेबल पे नंबर लगे हुए. Table 1 and 2, you have been allotted to be a community of scholars.
आप बहुत समझदार एकेडेमियंस हैं, यूनिवर्सिटियों के हेड्स हैं, PhDs हैं. And that's what table 1 and 2 is. Table 3 and 4, you are a community of women. 3 and 4. इसी तरह आप डुप्लीकेट करेंगे जो टेबल 21 and 22. हाथ उठाएं टेबल 1 and 22. Yes, you are also scholars. And table 23, 24, please. Yes, you are a community of women. तो आपने औरतों की आवाज़ बुलंद करने के लिए आज इकट्ठे हुए हैं. Table number 5, 6 and 25 and 26, you are a community of common ethnicity. अब आप अपने को पठान बना लें, सिंधी बना लें, बलोची बना लें, जो आपकी मर्जी है, ये आप आपस में डिसाइड करेंगे. Next, table 7 and 8, and I don't think there's 27, 28. 27 table है? Okay, 27 table है. आपने school parents community, I'm sure everybody has a parent sitting here with lots of things going on in their head. आपने community of parents. Number 5, table 9 and 10, you are a community of CEOs. पाकिस्तान के बड़े बड़े इदारों के आप CEOs बन जाएं. Table number 11 and 12, you are a religious community. अब आप अपने को बता दें जो भी religion आप चाहते हैं. You can be Baha'i, Hindu, Christian, Muslim, whatever you prefer, you have to decide. Table number 13 and 14, you are a business community. अब आप मेमन बन जाएं, बोरी बन जाएं, कोई भी businessman, businesswomen, people बन जाएं. Then table 15 and 16, you are IT community. आप IT के champs हैं. कौन से हैं जी? Table number 15, 16, नारा लगाएं. Very good जी, you are IT people. Then 17 and 18, community of social workers. ठीक? Social workers हैं आप. And lastly, table of 19 and 20, you are climate change advocates community. You are that. ठीक? दी दिल को भाग गई climate change वाली बात. All right. Now what you have to do next is, आपने अगले 5 मिनट में जैसे टेबल 1 and 2 कंबाइन हो जाएंगे. Put your heads together, and what you have to do in the next 5 minutes is अपने इस एक चार्ट पेपर पे मार्कर भी रखे हुए आपकी टेबल पे. 5 मिनट में अपनी कम्युनिटी को एक नाम देना है, एक लोगो बनाना है और एक स्लोगन लिखना है. Ready, steady, go. 5 minutes. बड़ा बड़ा लिखें, बड़ा सा खूबसूरत सा एक लोगो बनाएं. टेबल 1 and 2 का एक लोगो बनेगा, एक लोगो. टेबल 3 and 4 का एक चार्ट पेपर बनेगा, एक चार्ट पेपर मिल के बनाएं जी. अब अपनी मैच छोड़ के अगली टेबल पे शामिल हो जाएं. Yes, please gather together around one. नहीं, मेरा हैंडबैग यहाँ पड़े, मेरा फ़ोन यहाँ पड़े, मैं कैसे दूसरी टेबल पे जाऊँ? छोड़ें छोड़ें, कहीं नहीं जा रही आपकी चीज़ें. And you'll have to show off what you have created. Excellent. टाइम मैं कम इसलिए दे रही हूँ कि बहुत जल्दी spontaneously आपने करना है. फटाफट फटाफट, क्योंकि it's all on your fingertips. You know how to do it. बड़ा बड़ा बनाएं, बड़ा बड़ा. All right जी, your work is done. अब आप इन्हीं वालों के साथ रहें, अपनी टेबल पे वापस नहीं जाना और बहुत सारा काम करना है. अब आप में से एक स्पोक्स पर्सन बन जाए, वो अपनी कुर्सी पे खड़ा हो जाए चार्ट लेकर. अपनी कुर्सी पे खड़ा हो जाए चार्ट पेपर लेकर. शाबाश. अच्छा, जूते उतारने पड़ेंगे, जूते उतारने पड़ेंगे. शाबाश. कुर्सी पे जरूर खड़े हो, वो जो रैपर पड़े हैं उनको भी संभालें, नीचे नहीं फेंकना जी. आपका एक स्पोक्स पर्सन चार्ट पेपर लेके कुर्सी पे खड़ा हो जाए जूते उतार के. आपके पास माइक आ जाएगा, आपने बताना है आपने क्या बनाया. वेरी गुड, थैंक यू. 27. शाबाश. कुर्सी पे खड़े हो जाएं, जूते उतार कर. रिमेंबर कम्युनिटी, सेंस ऑफ कम्युनिटी. जूते उतार कर, ताकि सरीना की कुर्सी ना खराब हो. सेंस ऑफ कम्युनिटी.
वेरी गुड, कुर्सी पे खड़े होना है। आप में से एक कुर्सी पे खड़े हो जाएं, जूते उतार कर, ताकि सरीना की कुर्सी ना गंदी हो। ओके, मैं आ रही हूँ चेक करने, जूते उतरे, शाबाश, एक्सेलेंट। बस मैं से निकल के औरों का सोचना है। ऑलराइट, let's have the communities, community 1 and 2, 1 and 2 जो कुर्सी पे चढ़ रहे हैं, आपने माइक उनको देना है। जी आपने भी सब सुने जी। हमारी कम्युनिटी नंबर 1, हाँ बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छे, अमेजिंग। लेट्स गो बैक टू माई स्लाइड प्लीज। स्लाइड शो पे वो नंबर 1 लगा दें, इससे पहले वाली स्लाइड लगा दें। ये स्कॉलर्स, कम्युनिटी ऑफ स्कॉलर्स, कौन कुर्सी पे खड़ा है? चलें जी, चढ़ जाएं और माइक यहां पहुंच जाए। माइक सब प्लीज सुने। कम्युनिटी ऑफ स्कॉलर्स ने अपना नाम क्या रखा है, बोले? दानिशमंद दलेर। और आपका स्लोगन? Strength through wisdom. Whoa, strength through wisdom. And what's your logo say? Very simplistic logo. 1 2 3 ABC की किताब इनका स्लोगन है। जीते रहो टेबल 1 and 2। वंडरफुल। आपको हम मिनिस्ट्री दे रहे हैं एजुकेशन की। टेबल 3 and 4, माइक प्लीज गो रन। टेबल 3 and 4, अगला माइक वाले प्लीज 5 and 6 पे खड़े हो जाएं। 3 and 4 आपका है कम्युनिटी ऑफ विमेन। Women Inspiration Network. वेरी गुड। एंड योर स्लोगन? Ladder. लोगो इज द लैडर। एक्सेलेंट, चढ़ते जाओ। और स्लोगन? We win together. We win together. Excellent, beautiful thought. Right, table number 5 and 6. आगे चलें। Community of common ethnicity. 5 and 6. माइक जल्दी से पहुंचे। अगले माइक वाला प्लीज टेबल 7 and 8 पे आ जाएं। 5 and 6, आपका नाम क्या है कम्युनिटी का? अस्सलाम वालेकुम। मैं गुलाबे पाकिस्तान हूँ। हम 4 सूबे हैं, एक टहनी से वाबस्ता। हम खुशबुए पाकिस्तान हैं। वाह गुलाबे पाकिस्तान। वाह, अल्लाह करे बिल्कुल ये आइडियोलॉजी आपकी कामयाब हो। और तस्वीर क्या बनाई आपने, निशान क्या बनाया? निशान है गुलाब, उसके 4 गुलाब हैं जो एक टहनी से जुड़े हुए ओह हैं। ब्यूटीफुल, एक टहनी से जुड़े 4 गुलाब। जी हाँ। बहुत अच्छे, थैंक यू कैमरा, आपका बहुत शुक्रिया, कैमरे ने कैप्चर किया। थैंक यू आपका, बहुत खूबसूरत। नेक्स्ट टेबल 7 and 8, स्लाइड वापस लेके आए। स्लाइड जी, स्कूल पेरेंट्स कम्युनिटी 7 and 8। We're right here. यस प्लीज गो अहेड। We are the Family Fun Crew. फाउंडिंग Family Fun Crew. Family. उसके बाद क्या बोला? Fun. फन। Fun. ओके, जबरदस्त। एंड व्हाट इज योर स्लोगन? Together we suffer. Together we learn. Okay, together we suffer, together we rise. और आपका लोगो? ओह नाइस लोगो, ब्यूटीफुल। बच्चा और एडल्ट और सितारे निकल रहे हैं ऊपर से, बहुत खूबसूरत। 5 मिनट में आपने जादू दिखा दिया। लवली। कम्युनिटी ऑफ CEOs, टेबल 9 and 10 रेडी। टेबल 9 and 10 छा जाओ। माइक वाले जल्दी पहुंचे नेक्स्ट टेबल्स पे। कम्युनिटी 9 and 10, कम ऑन। So we are the leaders lead. Suits with roots is our tagline, and here is our logo with the arrows that's showing that we were consistently working with the vision mission values of the company. Too long. No, we don't want a speech. We just want a name, slogan and logo. And this is also sense of community कि औरों की बात सुने. Please silence. Here we are. Silence. Let's show respect to those who are speaking.
Table number 22. Silence, please. Silence. Let's listen to what's going on. Yes, please. It's Leaders League actually. Yes. And here we have our logo that shows the sexes. And the tagline is Suits with the Roots. Suits with the roots. Yeah. Zabardast. Suits with roots. That's the CEO slogan. Beautiful, magnificent. Well done. Slide दिखाएं जी. Next हमारे आते हैं religious community. Table 11, 12. Let's listen, please. Yes, for us, humanity is the best religion. So humanity and our slogan is human first. So Humans we respect first. all religion. There is no Human discrimination first. because we are born. Zabardast. And we believe that there is no religion but humanity. Right. Best. Best. Excellent. Thank you. Next table, please. Chart दिखाएं. Switch, please. Business community, 13 and 14. Mike पहुंचे जी and be ready on the 15-16 table, please. 13-14 क्या कह रहे हैं? Business community. Business community, come on, speak up. 13-14. Mike कहाँ है जी? Okay, please speak up. कुर्सी पे कौन खड़ा है? Stand on your chair, please. Come on. Assalamualaikum. So the name is Saad Baro, and the business idea is just we have a neighborhood and women working at home. So together the entire neighborhood makes a kitchen garden and grow organic vegetables and fruits, and then they sell it to the nearby markets. Organic business. Beautiful. Thank you so much. Next, please. We have the IT community. Yes, we are here. Okay, ready, go. We are here. Okay. Bole, bole. So we are global tech and Global tech. Yes, and our globe is in our hands. So everything is on our fingertip. Our logo is step forward. Step forward. Excellent, IT community. Thank you. Yay! Yeah. वापस आ जाएं स्लाइड पे. फिर आती है community of social workers 17-18. बोले. Okay, so the name of our organization is Ehsaas and our slogan is Ehsaas tum hi to ho. और the picture says that एक जो लोग हैं they are holding the world together. Oh. So ये overall. मजा आ गया, मजा आ गया. वाह भाई वाह. Thank you. Next, please. Community of climate change advocates. Table 19-20. Yes, please. Assalamualaikum. My name is Aksa, and our company name is EcoGen. Right. We are one community that is going to save all the other communities. If the earth is protected, so are all the inhabitants. Our logo is clean and green, and the logo is slogan is clean and green, and the logo is earth, that is very clean, pure water and green you can see there, and there are two leaves representing hope and regeneration. Beautiful. Thank you. EcoGen. Wonderful. Right. Next हम आ जाते हैं. वापस आइए slide पे please. We have first again community of scholars 21-22. जी क्या है आपका 21-22? Our community name is Scholarsphere. Yes. And our logo is Empowering Minds Shaping Future. Empowering Minds Shaping Future. Excellent. Thank you. Beautifully. And your logo? Our logo is Education is Freedom. Education is freedom. Fantastic. Thank you जी. Next table हमारी आती है community of women 23-24. Yes please.
Okay, the name is Shiro. हाँ. And our slogan is Born to Shine. Born to shine. And our logo is a woman, a powerful woman with a really good bicep. And she's holding together profession, family, household, and last but not the least, herself. Herself. Fantastic. Zabardast. Do we have any tables left? All right. Which table is that, please? 25. 25. बोले 25 का क्या है जी? जी, name है Mola Jat, and the logo is the symbol of power. And our slogan is Mola nu Mola nahi marda, the Mola nahi marda. वाह भाई वाह. We have to unite and we have to become a जबरदस्त. तो फिर से बोलें एक दफा स्लोगन. Mola nu Mola nahi marda, the Mola nahi marda. क्या बात है, बहुत अच्छे. And you are table number? 25, 26. ठीक है जी. आपका? 27 बोलें. Yes. And so we are a community of school parents, and our name is Guardian Angels. And we have a logo which has angel on it, very visible. And our tagline is nurturing the future. क्या बात है जी. फिर से नाम बताइए जरा. Guardian Angels. क्या बात है अली. Thank you so much अली. जबरदस्त. बहुत शुक्रिया. Wow, that was in 5 minutes. लोग तो महीने लगा देते हैं ये करने में. Now remember, it's so easy to do it if you put the heads together. किसी की कोई लड़ाई हुई? नहीं, मेरा नाम रखना है दूसरे. तुम क्या कह रहे हो? कोई लड़ाई हुई किसी की? Was there a sense of communion, a sentiment that we have to do it together? All these things you brought in. What और कितने diverse topics मैंने आपको दिए, फिर भी आप लोग सब कर गए. जरा एक दूसरे को देख के कहें क्या बात है, क्या बात है. एक दूसरे को देखें और क्या बोलें क्या बात है, क्या बात है. वाह वाह वाह, क्या बात है. Thank you, thank you. All right, ये काम आसान था. अब जो मैं आपको जरा सा मुश्किल काम दे रही हूं वो उसकी रूह है. आपने जो इतने बड़े बड़े नाम और स्लोगन दे दिए, ये तो जाहिरी जो चीज़ है, वो अंदर क्या हो रहा है, उसकी रूह कितनी पुख्ता है, कितनी मजबूत है. क्योंकि रूह आगे लेके जाती है, जिस्म तो ख़त्म हो जाता है. चाहे वो सिकंदर आज़म हो या बुल्ले शाह हो, जिस्म ख़त्म हो जाता है लेकिन रूह हमेशा कायम दायम रहती है. तो अब आपने क्या करना है, दूसरे चार्ट पे अपने write 4 principles that form the basis of your community. बुनियाद आपकी 4 असूलों पे खड़ी होनी है. वो 4 असूल क्या हैं? 5 minutes, go. फिर अपने साथ जुड़ जाएं. प्लीज लीव योर टेबल. फिर आके बैठ गए अपनी मेज पे. अपनी टेरिटरी को छोड़ें. कंबाइन योर टेरिटरीज. 4 principles. 5 minutes, go. बड़ा बड़ा लिखें. रिमेंबर, राइट इट लार्ज. दूसरे चार्ट पे, उसके चाहे बैक पे भी लिख सकते हैं आप. कागज बचा लें. बिल्कुल, बहुत अच्छा ख्याल है. उसी चार्ट के पीछे भी लिखा जा सकता है. आप क्या चाहते हैं हमारी कम्युनिटी के असूल किन 4 सतूनों पे, जमीन के नीचे होते हैं सतून, इनकी जड़ों में क्या हो जो उनको मजबूत बनाएंगे. 4 बनाने. 4 जबरदस्त. जिसका पहले हो जाए खत्म वो बोले ये. ओ, कर भी लिया. अच्छा, आपका एक स्पोक्स पर्सन चार्ट लेके स्टेज पे आ जाए. जिनका हो गया है प्लीज अपना चार्ट लेके स्टेज पे आ जाएं. एक. I need 27, no, half of that. 12 people on stage. If you have completed your 4 pillars, please one person bring your chart and come on stage. हाँ जी, देखते हैं स्टेज पे पहले कौन आता है. एक शख्स. ओह वंडरफुल. हमारे सबसे हसीन लोग सबसे पहले आ रहे हैं. जबरदस्त. सभी हसीन हैं.
Okay, let's do a little squiggle. Music. यही म्यूजिक जरा ऊंचा कर लें. Let's do a little squiggle. Come on. क्या हुआ? जबरदस्त जबरदस्त. आते रहें आते रहें. Very nice. Please keep coming up. अभी आखिरी मिनट चल रहा है वैसे. टाइम है. ओह इधर तो 5 आ गए. बहुत खूब बहुत खूब. आते जाएं जी. अच्छा जब ये सब अपने चार्ट्स पढ़ेंगे, बाकियों से गुजारिश है प्लीज पुट योर माइंड्स. आते जाएं. प्लीज पुट योर माइंड्स ऑन सीकिंग व्हाट इज कॉमन बिटवीन देम. What is common between all the principles that are coming up? क्या हो गया? One person per table. One person. One person per table. अभी हम Are you 3 people from a table? 1 person per table. Okay, thank you. Thank you. And please, instructions for the audience is आपने गौर व फिक्र करनी है कि लोग जो बताएंगे आपको इसमें कॉमन क्या चीज़ें निकली हैं. क्या बहुत ही मुख्तलिफ हर कम्युनिटी मुख्तलिफ है, लेकिन क्या अलग अलग बातें कर रही है या एक ही चीज़ बोल रहे हैं सब बार बार. सो लेट्स हैंड ओवर. 5 मिनट आपके पूरे हुए और सबसे पहले मैडम आप आई थी, आपसे शुरू करते हैं. आपने सिर्फ 4 अपने लफ्ज़ बोलने हैं. 1 मिनट मैम. अच्छा इस म्यूज़िक बंद कर दें प्लीज़. थैंक यू. अच्छा अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मैं टेबल नंबर 6 गुलाब पाकिस्तान से मुखातिब हूँ. सबसे पहले तालीम में अहद, तरबियत, अज़म, अमल मिल के तालीम बनती है. फिर से आप बहुत हल्का बोल रही हैं. अच्छा अहद पाकिस्तान, ठीक है. अहद, तरबियत, अज़म, अमल, तालीम. बहुत खूब जी. आप यहीं ये रहें. आप भी नोटिस करें कि ये लफ्ज़ और कहीं से आ रहे हैं कि नहीं. ठीक. फिर इनके बाद कौन आई थी जी? Okay. Assalamu alaikum. My name is Zariba and I am from Jazz. I believe that the 4 principles that form the basis of the business community are empowerment, innovation, and inclusion. It's the one, basically. And the second one is human rights. The third one is empathy and transparency. And the fourth one is acceptance and collaboration. इन्होंने 8 बना दिए एंड लगा के. एक्सेप्टेंस एंड कोलैबोरेशन. ब्यूटिफुल. ठीक. अच्छा कुछ कॉमन चीज़ें निकल रही हैं लाइक इंक्लूजन, अहद, तरबियत. देखिए सब तरबियत में चीज़ें शामिल हो रही हैं. ब्यूटिफुल. आपका Assalamualaikum. My name is Plesia. I'm from 4G Cement and representing group 7 and table 7 and 8, Fatma group and 4G Cement. Our basic principles are compassion, innovation, adventure, trust and collaboration. School parent community. Compassion, innovation, adventure, trust and collaboration. Ji, thank you. Assalamu alaikum everyone. This is Zubia Shahriyar from Faisal Bank, and we were having a table number 3 and 4 with the jazz community as well, and jazz company as well, and our community was for the community of women, and the 4 principles that build a strong basis are the respect and care, khidmat, equality, collaboration and enablement, and last but not the least, empathy. Thank you. Well done. Our community is the community of scholars. Right, and the principles are empowerment, inclusion, access, and integrity. Beautiful. Thank you. Pass on the mic, please. Hello. My name is Aksa from Telenor Bank,
And our community is advocacy for climate change. And we have what we will work on, the principles for which the organization, EcoGen, will work on. It is fresh air and fresh water for everyone, converse, reuse, recycle, responsible energy, reusable energy, and go green plantation for agriculture growth. Wonderful. Thank you. Getting on. This is Farah from OGDCL. Our community is a religious community, and the basic principles are equal rights to all, respect, kindness and tolerance, celebration of individuality. Thank you. Assalamu alaikum. This is Mariam Fatima. I'm representing Ingron for Share, and the community I'm representing is religious community. So the 4 principles that we have set are equality and respect for all, justice, that includes freedom of expression, tolerance, and as many of us said, integrity. Yeah, this is Sarah Sheikh from UBank. Our community is the parents' community, and we expect our children to be, learning in a way where they are brought up as equals. Equality is our main principle. Then it is going to be values. The values should be inculcated with the, with the education system, and then the freedom of choice and excellence in the studies. Yeah. Lift myself up, thank you. And we go to... Assalamu alaikum, I'm Dr. Samia from Fauji Foundation Group, representing the community of women. And our basic 4 principles are, it's never too late, tolerance, we have to value ourselves, and all inclusive, as other groups have also mentioned. Thank you. Beautiful. My name is Sumaira. I'm from National Bank of Pakistan. My community is Scholar-Sphere, and our principles are inspiration, inclusiveness, intellectual curiosity, and continued learning. Thank you. Assalamu alaikum. My name is Heather Ali. I'm from the community of social workers. The 4 principles and the pillars that we have is togetherness. There was one empowerment, we have the similar, then the empathy that was also talked about, and then the integrity that was also talked about. I'm going to keep this one. Thank you. Assalamu alaikum, I'm Zunaira Maryam, and I'm representing the community of common ethnicity. We have chosen Punjabi as the ethnicity, and I'll be describing the values and characteristics the Punjabis take pride in, and those are adaptability and acceptance, traditions and heritage, celebration of food and culture, family values, hospitality, and last but not the least, empathy. What? Empathy. Zabardast. Thank you, Ji. And I am Sarah Sajid from Benkal Habib, and I am from, our community was IT community, and the 4 principles are respect for everyone, sense of ownership, because we need to have the sense of ownership in every aspect. And then we have be the change you want and help each other. Thank you. Thank you. And last but not the least. Assalamu alaikum ji, this is Mahanur. I'm representing the CEOs community, and we coined the name Leaders League for our community. The core values that we follow are lead by example, strength in numbers, empower and include, and ambitious. So be humble, but be ambitious. Oh, ambitious. Congratulations, everyone. Please stay there. Did you hear any voices that you had thought of at your table of 20, which kept coming up? Any words which were common? Empathy? अहद लग रहा है मुझे कि अहद से कि नीयत अच्छी हो और inclusion. Integrity. Integrity. Respect, exactly. Any of you in the audience, चलें ये तो हमारे 25 लोग खड़े, कितने नहीं हम लोग 15 लोग खड़े हैं. Any of you disagree कि हमें society में ना छोड़ो, integrity नहीं होनी चाहिए? Anyone? Show of hand. हमारे मुल्क में, हमारे घरों में, हमारी community में respect ना हो, आ जाओ मेरी बेइज्जती करो. कोई है ऐसा? ऐसा कोई है जो कहता है मेरे से empathize ना करो, या मुझे अप्रिशिएट ना करो, मुझे रिकग्नाइज ना करो, मुझे क्या यहाँ पर लिखा है टॉलरेंस ना दो, मुझे एम्पावरमेंट मेरी ना हो. ऑल दीज वर्ड्स आर बेसिक ह्यूमन वैल्यूज. ये आवाज़ें मैं ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अमेरिका किधर भी चली जाती और ये काम देती तो यही आवाज़ें निकलती.
यही आवाज़ें निकलती जो घर को भी चाहिए, मोहल्ले वालों को भी चाहिए, कौम को भी चाहिए, कोई फ़र्क नहीं है. थैंक यू फॉर बीइंग सो इंजीनियस. ये किसका था? थैंक यू भी, बहुत शुक्रिया. तशरीफ़ लाएं. अब माजरा ये शुरू होता है कि चाहिए तो सबको, लेकिन है क्यों नहीं? फिर कम्युनिटीज़ फेल क्यों हो जाती हैं? So what is it? The principles of a community which are globally manifested are these. आप अपने फाउंडेशनल 4 लफ्ज़ों को देखें, कहीं ना कहीं इसमें फिट हो जाते हैं. What are they? Prepare the people. क्यों आपने तैयारी की, मिल के तैयारी की. किसी एक ने आके ऊपर से हुक्म नहीं दे दिया कि ये हमारा नाम है, ये स्लोगन है और ये लोगो है. कम्युनिटी कौन होती है? जो मिल के एक चीज़ बनाती है. दूसरा क्या है? प्रोग्रेस. उनको अपने तरक्की का, आगे बढ़ने का होता है. माजी में जो हुआ अब छोड़ दो. कल भी मैंने एक हमारे सदर की तकरीर सुनी और समरी थी सिर्फ. उस समरी में भी 80% उनमें बात कर रहे थे कि जो हो गया, और सिर्फ 20% के अब हम क्या करना चाहते हैं. उल्टा होना चाहिए. 80% बोलें और पीछे की छोड़ दें. अब तीसरी चीज़ पार्टनरशिप. भाई मैंने क्या करना है? सिर्फ वोट डालने से डेमोक्रेसी नहीं बनती. डेमोक्रेसी बनती है हर सिटीज़न के अमल से, कि मैं अपने घर का नलका कितना इस्तेमाल करती हूँ. मैं बाल इसलिए छोटे रखती हूँ कि मेरे कौम का क्या, मेरी दुनिया का पानी ख़त्म हो रहा है. मैं अपने शहर में कराची में साइकिल पे काम पे जाती हूँ, धोबी के अंडे लेने साइकिल पे जाती हूँ ताकि माहौल ना ख़राब हो. हम अपने लेवल तक क्या ज़िम्मेदारी लेते हैं. देन वी हैव all the other things that you have spoken about. Health equity. सब सेहतमंद रहे मेरी कम्युनिटी में. हम लोग facilitate करें leadership. Everybody is a leader of their own spectrum of responsibilities. Culture of learning. सब grow करना चाहें. We have strategic communication. सबकी आवाज़ strategic level पे आए. मुझे याद है जब प्रेसिडेंट कैनेडी ने कहा था We will send a man to the moon. उसके बाद नासा जन्म आया. It came into existence. अब कैनेडी साहब आए नासा पे फीता काटने. पहला दिन था, उनको टूर दिया जा रहा था नासा का. कैनेडी साहब ने कोने में एक साहब को देखा who was mopping the floor. उन्होंने डाइवर्ट करके उनके पास चले गए. कहा I am Kennedy, what's your name? उन्होंने कहा I am Mr. Smith. कैनेडी ने कहा What are you doing, Mr. Smith? हालांकि नजर आ रहा था. He said, I am sending a man to the moon. Kennedy said, How are you doing that? He said, This building contains precision instruments, and if I don't keep the dust away, my man will not reach the moon and come home safely. So whenever you are making a leader out of everyone's responsibility, sustainable thinking, जब मैं करते हैं तो sustainable नहीं होता, जब हम करते हैं तो आगे बढ़ने की उम्मीद होती है. एंड कम्युनिटी इंगेजमेंट, किस तरह लोगों को यूनाइटेड कम्युनल सेंस में रखना, इसके लिए माँ बाप की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है. माँ बाप घरों में क्या शुरू करते हैं? द सेंस ऑफ कम्युनियन. हम अपने बच्चों को कहते हैं होमवर्क कर लो, कमरा साफ कर लो, फिर टीवी देखने को मिलेगा, वीडियो गेम देखने को मिलेगी. तो उनको जो अपनी साइकिल साफ कर लो, अपना अपना. बच्चा कहता है ये मेरी जिम्मेदारी, मेरी ज़ात तक महदूद है. दैट्स नॉट बिल्डिंग अ सेंस ऑफ कम्युनिटी इन अ जनरेशन. आप अपने बच्चों से कहें एक स्टोरी बुक्स निकालो. हम सैटरडे को हॉस्पिटल जाके कैंसर के जो बच्चे हैं उनको स्टोरी सुनाएंगे. महीने में 2 घंटे 1 घंटे अपने बच्चों को ले जाएं. आप कहें कि मोहल्ले के बच्चों को इकट्ठा करते हैं, क्रिकेट मैच कराते हैं. सेंस ऑफ कम्युनिटी. लेट द चाइल्ड ऑर्गेनाइज दैट क्रिकेट मैच. यू बी द फैसिलिटेटर. हाँ, क्या सोचा है? पावरफुल मोस्ट वर्ड्स 4. तुम्हारा क्या ख्याल है? बच्चे को सोचने दे. हम सारा ऑलरेडी बच्चों के लिए सोच लेते हैं कि लंच बॉक्स में क्या रखना है, और उनके शादी होगी तो बच्चों का नाम क्या होगा, पहले ही माँ बाप ने सोच लिया होता है. क्योंकि अपने नामुकम्मल ख्वाब हम अपने बच्चों के थ्रू पूरे कर रहे होते हैं. हट जाएं वहाँ से, बड़ा सोचें. मैं अपनी घर में जो लेडी आती हैं सफाई करने, शहनाज, उनके साथ बैठ के विजन की बातें करती हूँ
आप हम मिलके चांद पे कब जाएंगे? कोई बात नहीं, it seems ideological. So what? So look at what your kids are doing. सिर्फ ये होमवर्क जो आप स्टडी कर रहे हैं, ये कैसे कॉन्सेप्ट कम्युनिटी में काम आ सकता है, ये लैंग्वेज इस्तेमाल करना शुरू करें. So communities that thrive versus those that survive, इसमें communities that are on purpose, which are principle centered. जितने आपने चीज़ें लिखी हैं, they are principles. दुनिया में हर जगह चलेंगी. बॉटम लाइन इनकी क्या है? ईमान पे बेस्ड है. हम कर सकते हैं. एक और आवाज़ 4 लफ्ज़ों की अपने बच्चों के साथ उठाएं. शाबाश, तुम कर सकती हो. 5 लफ्ज़ हैं, या कर सकते हो. फिर continuous engagement, far-sighted and mutual gain. Communities that thrive have a why. क्यों हम कर रहे हैं? As their spirit. Communities that don't survive are called pseudo communities. ज़ाहिरन नज़र आते हैं लेकिन खोखले होते हैं. उसकी वजह क्या होती है? पर्सनल एजेंडाज होते हैं, ग्रुपिंग्स बन जाती हैं, मेरा तुम्हारा, अदरनेस, पावर एंड कंट्रोल ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है. एंड वी निगलेक्ट द प्रिंसिपल्स. वाई? बिकॉज दीज कम्युनिटीज़ आर बेस्ड ऑन द व्हाट. हमने क्या करना है, ये अपने क्यों को भूल जाते हैं, आइडियोलॉजी को भूल जाते हैं और जिस्म पे आ जाते हैं, जिसको दफनाना ही होता है बाद में. सो हियर आर एग्जाम्पल्स ऑफ कम्युनिटीज़ दैट फेल्ड. Eventu is failed because उनका product fit नहीं हो रहा था market के साथ. They were self-centered, they were not far-sighted. Formspring, 0 to 2 million users. These are all virtual businesses. Because cyberbullying, इतनी जल्दी उन्होंने growth किया कि cyberbullying control ना हुई. MySpace में poor systems थे, Yik-Yak में not self-sustaining, they were dependent on donors, and community coders, lack of responsiveness. हम कर रहे थे लेकिन customer का नहीं सोच रहे थे. And with that, I ask you to take away my message, which is, who is responsible for this country, for this world? Who is responsible? What can I do to produce collective empowerment? And with that thought, please take it along. Again, interconnectedness of personal journeys to consider collective empowerment. Thank you very much and wish you a very happy day. Thank you. Thank you so much, Shipa ji, for this information because it is so important. Pakistan is at a very interesting crux in its own journey as a country, and collective empowerment is exactly what we need to look at. Personal agenda सबके अपने होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम उसकी आगे लेकर चलें. But thank you so much, Shipa ji, for putting it in such a good way. But आपने एक चीज़ बोला था कि लोगों को नहीं अच्छा लगता है कि अगर उनकी बेइज्जती करें. To be very honest, बहुत लोगों को अच्छा लगता है उनकी बेइज्जती करा दें. But anyways, I hope you guys enjoyed this event. Did you guys enjoy the workshop? Yes, yes. Come on, a little more. Yes, yes. All right, so I would like to call on stage the CHRO of Murree Petroleum, Mrs. Fawzia Ahmed, to come and present a memento to Shireen Naqvi